A very good evening and a very warm welcome one more time to this lovely live session with me, that is Rohan Mehta, your anchor, choreographer, ramp, fashion director, whatever you know me as. And thank you very much. अभी कुछ देर पहले हम लोग फेसबुक पे जुड़े हुए थे साथ में. नाउ वी आर बैक लाइव ऑन इंस्टाग्राम. और काफ़ी इस बीच जो आधे घंटे का गैप था मुझे काफ़ी मैसेजेस आए. सो यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर फर्स्टली आई वुड से अ हाई टू एवरीवन हु इज जॉइंड इन. दैट इज डीजे मॉन्टी, गौरांग, एक नंबर है जो मुझे पता नहीं है नाम क्या है, राजेश्री, जानवी अगेन, प्रिया, थैंक यू वेरी मच. सभी को अ बिग 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 हाई. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फैशन इंडस्ट्री, द ग्लैमर इंडस्ट्री. काफ़ी सवाल जवाब हुए हैं फेसबुक के ऊपर. सो नाउ आई हैव कम अप ऑन द इंस्टाग्राम टू गिव यू ऑल द आंसर्स बैक. बट इन बिटवीन आई वुड लाइक टू से कि कुछ देर जो गैप था मुझे काफ़ी सवाल आए हैं यहाँ पे. आई हैव जस्ट गॉट लाइक 6 to 7 न्यू क्वेश्चंस दैट आई रियली नीड टू आंसर. एंड सम ऑफ द पीपल आर जॉइनिंग इन जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं. सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मॉडलिंग इंडस्ट्री का स्कोप. आई डोंट नो व्हाई इट साउंड्स लाइक मुझे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह पूछा गया है कि कोविड के बाद हमारे पूरे इंडिया का इकोनॉमी कैसा रहेगा. गाइस, मॉडलिंग इंडस्ट्री का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है. आई नो कुछ चीज़ें ऐसे आप रिलेटेड पूछ रहे हो कि हम मॉडलिंग इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं. यू नो, फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको किस किस्म की मॉडलिंग करनी है. व्हाट डू यू रियली वांट टू बिकम? यू वांट टू बी अ रैंप मॉडल, you want to get into the pageantry industry, you want to get into print modeling, you want to get into commercial modeling, you want to get into ads, you want to get into just and plain simple stage shows. आपको करना क्या है? Okay, hi everyone, hi. Okay, आपको करना क्या है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. A lot of people who have joined in, I am fortunate enough to work with a majority of these people who are joining in on the live session right now. These people have worked really hard. You know, I've made a rule not to take names, so I'm not able to take names. But सभी जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किन लोगों की बात कर रहा हूँ. They have really worked hard. So you need to firstly understand what kind of modeling category that you want to go in for. Yeah, firstly you have to be very very clear with it. सेकेंडली उसका स्कोप, हम इंडस्ट्री का स्कोप नहीं बात कर सकते, बट वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इज आवर स्कोप एज अ मॉडल. नाउ फर्स्टली व्हेन you become a doctor or you become an engineer, what do? You go and you study that subject. So for modeling or for acting or to become any kind of an artist, you need to study that art. It's as simple as that. Yeah, you read to really put yourself there, you need to study and then you get into that industry and worked the best out of it. Yeah, स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइड है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है. यू नीड टू मेक अ पॉइंट, मैं ये मॉडल करने वाला हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा. यू हैव टू मेक योर चॉइसेस राइट and only then get into it. Yeah, I think will you please guide me about the print modeling in Nasik? There are a lot of print modeling shoots happening in Nasik. अभी तो सभी जैसे you know the situation, but there are a lot of branding shoots that I am also doing. As in my entire team, the RM team that we have been into the branding stuff now. You might have seen our recent shoots with some hotels, some fashion garments, aprils, and we are coming up with more shoots, and I would definitely let you know about one of them. And if you are one of the best candidates for them, I think we can work out together, right? One second, someone has just sent me a request, and right.
Okay, so that's one thing, and now let's go on with the sessions. Now let's go on with the sessions. That is the question and answer that I've got. So how to register for live online shows? Now how to register for live online shows? It's very simple, ma'am और sir जिन्होंने भी मुझे ये क्वेश्चन पूछा है. जब क्रिएटिव्स बनते हैं, जब पोस्टर्स एड्स आती है, they give you the contact details. So you just go on to the contact details and get registered. It's as simple as that. But one thing that I'm here for is to give you a tip of going, talking to them, have a conversation with them, understand what they're trying to do. Because जो situations है आजकल बहुत online सब कुछ चल रहा है, but you need to be aware about certain things. This is just guidelines that I'm giving you. Just call them, inquire about them. ये online session जो होने वाले हैं, जो sessions नहीं होते, online shows. अब online shows में क्या benefits है? You need to understand that. Okay, first and foremost you have to do that, and only then get enrolled into such shows or contests or pageants or events. Do not put up your hard-earned money unnecessary, okay, anywhere. Grooming sessions for online shows. Grooming sessions for online shows, yeah, online grooming sessions. I mean, I'm a bit confused with this question, but agar grooming sessions hai, online grooming sessions, then there's a good news, guys, that I am starting off with the online grooming sessions very, very soon. I'm starting here online grooming sessions absolutely soon, ASAP. Okay, and grooming sessions for online shows. So I think you need to ask the organizer of that show that are you providing a grooming session. But जैसे कि Facebook पे जब मैं online live था, मैंने कहा था कि please grooming word को सिर्फ इस्तेमाल ना करें. Grooming is not only just a word to get money from our clients. Understand this. You need to get grooming sessions, and to get grooming sessions, they need to be groomed. So when you talk to those people, when you get into interaction, see how well they are groomed, what they have done. A lot of fake things have been working around, so please beware about it completely. Don't put your hard-earned money. Again and again I'm saying this, there's a reason for this. One of my known person has put in money for an online, I don't want to use, it's a beep word, but उसके लिए किया है और वो पैसा गायब हो गया है. तो वो इंसान भी गायब हो गया और वो पैसा भी गायब हो गया. So please do not put in money for such things. Okay. Yeah, this is an interesting question. What to do for bigger shows? ये मुझे इतना ही आया था. I just analyze into काफी मॉडल्स होते हैं जो लोकल शोज करते हैं. तो उनमें से किसी ने मुझे शायद ये पूछा होगा कि अगर उन्होंने आगे जाके बड़े शोज करने हैं, ब्रांड शोज करने हैं, इंटरनेशनल लेवल के शोज करने हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए. फर्स्टली स्टार्ट with small shows. Firstly start with the small shows. Get trained by proper people, क्योंकि जरूरी नहीं छोटा शो है, लोकल शो है तो ट्रेनर्स अच्छे नहीं मिलेंगे. ट्रेनर्स अच्छे मिलते हैं. So you need to get trained by good people and start doing some good shows. And this what I call these kind of small shows is I would say a warm-up session. This is a warm-up session for all the people who want to start off and do good in the business, because आप जब बड़े shows करने जाते हो या बड़े institutes को आप join करते हो, you are already aware about certain things that you have done. All right? Do not get carried away with whatever people talk. Maybe even if it is me,
यू नो कि रोहन सर ने बोला है तो ये बॉस ऐसा नहीं होता है. डू गो एंड इंक्वायर. You are getting into modeling, you are getting into an industry which is widely spread. You need to understand. किसी ने कुछ बोला ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे नहीं होता है. Because why did I use this word is don't get carried away. I've seen certain people using international name. Yeah, they're just using international name. XYZ international show. राइट भाई, आप लोग जो भी ये ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लीज डोंट यूज सच नेम्स जहां पे आपके लोकल सिटीज में से भी कोई नहीं आता है. मतलब अगर मैं नासिक में ऑर्गेनाइज कर रहा हूं तो XYZ आसपास की जगह से भी मेरे पास लोग नहीं आ रहे, मैं इंटरनेशनल कैसे कह सकता हूं? हाउ कैन आई से इंटरनेशनल? व्हाट डू यू नो बाय इंटरनेशनल? नेशनल लेवल? अरे कैसे, क्या नेशनल लेवल? नहीं होता है बॉस. Don't get carried away with all these stupid things. Okay, so what do you do for bigger shows? Firstly, get trained properly. Start working on your walk if you are getting into the ramp. Start working on your poses if you're getting into prints. Start working on your body language if you're trying to get into both, because body language is needed anyhow. And start reading. Start getting exposed to whatever new things are coming in the fashion industry. Yeah, so not like the music videos and stuff, but something related जो आपकी हेल्प कर सके. And then आगे अगर आप बढ़ना चाहोगे, so please, I'm here to help you guys. Just message me, I'll guide you properly and I'll let you know what you have to do. Yeah, so all the very best for the person who have asked me this question. I hope to see you at the best of the actual international levels, right? Okay. Is a question answer round very much needed? देखिए, पहले तो फैशन शोज, जैसे मैंने पहले भी कहा था, फैशन शोज और ब्यूटी पेजेंट्स में बहुत डिफरेंस है. सो जिन्होंने ये मुझे क्वेश्चन पूछा है, आपने पूछा है क्वेश्चन आंसर राउंड फैशन शोज में जरूरी है या नहीं. पहली बात तो क्वेश्चन आंसर राउंड फैशन शो में नहीं होते. फैशन शो इज अ फैशन शो. इट्स अ शो related to the new creativity that the fashion designer has made. They want to display their garments or products or designs, और वो डिस्प्ले करते हैं हम स्टेज पे, हम रैंप पे. तो उसमें ना कोई टाइटल होता है और उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड की जरूरत नहीं है. ओके, अगर आपको कोई दिखता है, आप मेरे सेशंस के बाद ऑब्वियसली वो लोग चेंज कर देंगे अपने क्रिएटिव्स, बट अगर कोई आपको बोलता है फैशन शो है और आपको हम लोग टाइटल देने वाले, तो वो शो करना ही मत. आप निकल जाना उस शो से. It is not worth. And I know now people will change it. Good if you change it. And yes, I feel personally question answer round is very much needed in a beauty pageant. Yeah, जहाँ पे competition होता है, जहाँ titles दिए जाते हैं, I feel बहुत जरूरी है. क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, but it enhances your confidence level. It helps to improve it. Just for an example, take this, that you are standing, you're one of the finalists. Okay, आप finals तक पहुंच गए हो. You have like 1,000, 2,000 people sitting right in front of you, and you've just been standing there for the last 10 minutes, और suddenly आपके पास mic आता है. Mic आने के बाद you do not know what the question would be, so you're absolutely nervous. It's very obvious. A person like me will get nervous. So obviously जो new लोग आते हैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में, वो डेफिनेटली नर्वस होते हैं. तो आप वहां पे हो, आपके पास क्वेश्चन आ गया अचानक से, एंड यू आर अनअवेयर व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू से. आप हाथ कहाँ रखोगे, आप देखोगे कहाँ, and if you make a mistake into that question answer, you fumble, you lose your confidence,
how to get back that confidence on stage is very important. And for this reason, I feel question answer round होना चाहिए. एक पेजेंट में आप नहीं दे पाओगे आंसर, दो पेजेंट्स में नहीं दे पाओगे, तीन पेजेंट्स में नहीं दे पाओगे, बट व्हेन यू स्टार्ट गिविंग आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस, believe me, your confidence will be right here at the top. Yeah, so there was one question to me कि confidence बढ़ाने के लिए क्या किया जाए. I would just say try taking such scenes. आप घर पे हो अभी, you have got a lot of time to work on it. You can just be there, take one question and try answering it. Ask your family members to put questions to you and see how would you stand and how would you talk, where would you look, when would you smile, क्या जवाब देना है. I think this will really work out for you. Just practice it. This is a practice session, right? So एक वो हो गया, और कुछ questions थे. Yeah, a person whom I really look up to has asked me this question: where do I see fashion shows considering public gathering in this situation? So for the person I look up to, I would say I always keep the positive hopes high. So I see the fashion shows and my work coming really fast, and I hope this situation gets resolved very soon, because we all are suffering and we all are struggling from this situation. And as of now, I'm just preparing to give you the best of my knowledge. So I'm here. Thank you for asking this question. And there are a lot of people who have just joined in. और कुछ लोग, कुछ वो भी है, कुछ फ्रेंड्स वो भी है जो फेसबुक पे मेरे साथ लाइव थे. I would just like to ask you, if you have any questions that can just come up to your mind right now, you can just put up the question over here and we can answer it. Yeah. There was one question which I think I can share it here also, and that the question was, what qualities a good model should have and what a person should do to become a good model. So इसका मैंने जवाब दिया था. तो there are a lot of things that I've made a list to become a good model. Firstly, you really need to know yourself, work on yourself, be honest to yourself, be dedicated towards the work you're doing, be very full of practical and technical knowledge about what you're going to do. Practical is your practice. तो आप जब स्टेज पे होते हो, आप जब रैम्प पे होते हो, आपका जब शो है, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रैम्प, व्हाट इज द स्टेज. यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू गो, व्हाट टू डू, हाउ टू स्टैंड, वेयर टू स्माइल, व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू टॉक, व्हेन टू वॉक, एवरीथिंग. एंड टेक्निकल नॉलेज इज technicalities of the stage and music and lights and audience and everything. You need to understand the backstage as well. Okay, all the artists start working on the backstage. Yeah, because वो बहुत important है. आप सामने जो दिखते हो वो everyone would love you, but backstage is very important. You need to understand how the backstage management works. Okay, so my next session would be I would try and come up on the backstage management. Anyone who would love to get into the session, we are planning to put the sessions every Friday. You can throw up your questions and we can work on those kind of the categories. Next is you need to be patient enough. You have to have patience, because we have always heard this: Rome wasn't built in a day. आप कोई भी सक्सेस स्टोरीज अगर आप सुनते हो, वो आज सुनते हो, पर उसका काम बहुत पहले शुरू हो चुका है. They have been struggling since long. So if you're successful today, it doesn't mean that you have just worked one night before. You have to really keep working. Thank you everyone. You guys are lovely. People are still joining in. That's a wonderful thing. And yeah, please believe in the law of cause and effect. What you do, you will get. Work hard, you get the best things. You do not work, you do not get it, because nothing comes for free. Yeah. So is anyone having any kind of questions related to fashion shows, beauty pageants, modeling, stage, ramp, short films, entertainment, glamour, whatever you want to ask? Okay. Some models are uncomfortable to talk in English.
They thought people making them fool because they don't talk in. Okay, firstly, Anuja. Hi Anuja. बहुत दिन बाद आपको मैं लाइव आपका मैंने मैसेज पढ़ा है. It feels good. I've worked with you, so I know this. And Anuja is a very good model. I think I've worked with her. So language is not an issue. Language is not an issue right now at the local levels, at the city levels, at national levels. काफी shows में आजकल they give you the liberty of choosing your language. Okay, they give you the liberty of choosing your language. So you do not have to be uncomfortable. आपको बिल्कुल भी आपका comfort zone निकालना नहीं है. If you understand Marathi, you talk in Marathi, you can speak in Marathi. Marathi is a beautiful language. Hindi is a beautiful language. English is a beautiful language. जो language आपको comfortable लगती है, आप please उस language में stage पे जाइए और स्टेज पे जाके बात करें. अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स हिंदी में चाहिए, मराठी में चाहिए, यू कैन टेल दी जजेस, यू कैन रिक्वेस्ट देम, राइट? यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन इन वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल. नाउ रिलेटेड टू लैंग्वेज एक और प्रॉब्लम हो जाता है. सी पीपल ट्राई टू शो ऑफ. मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है, मुझे मराठी बहुत अच्छी आती है, मुझे इंग्लिश बहुत. एंड जब टाइम आता है, when there is a finale time, you start getting all the wrong grammatical errors. You start fumbling. जब आप फंबल करते हो, जब आपसे मिस्टेक हो जाती है बोलने में, तो आप डर जाते हो, आप कॉन्शियस हो जाते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, उससे आप मिस्टेक करते हो. सो ऑलवेज चूज अ लैंग्वेज जो आप कंफर्टेबल हो. आस्क द कोरियोग्राफर, आस्क द ऑर्गेनाइजर्स, आर दे कंफर्टेबल यूजिंग टू लैंग्वेजेस? So if you can use English, Hindi, English, जैसे मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, you can use that. So language is not a problem. When you go ahead on the international platforms, depends on shows to shows, so you need to be really very, very careful about that. Yeah? And being English, start reading newspapers. I think you'll pull it off. Okay, how we know if someone is fake or not? Oh, someone is fake or not. थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम इजी भी है. बिकॉज when you go to a genuine person, the genuine person is not going to show off, unnecessary. आपको बताएंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया है, मैंने ऐसे काम किया, मैंने वैसे काम किया, मैं ये काम करते हैं, कोई नहीं बोलता है. और फेक से ज्यादा मैं कहूंगा, फेक से फेक इज नॉट द राइट वर्ड. आई वुड से अमैच्योर्स, immature people. Don't work with them. How do you come to know? You come to know with their working style. I can't use names. One of my show, I got a message. I actually got a person who was working with me at that point of time told me that XYZ show में आपके शो का पूरा कोरियोग्राफी को कॉपी किया था, वीडियो पे देखा था और उसी का कोरियोग्राफी वहां पे कॉपी किया. सो ऐसे भी लोग हैं जो गूगल करके कोरियोग्राफी देखते हैं. दे डू नॉट हैव क्रिएटिविटी. ग्रूमिंग वो नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ग्रूम्ड अप नहीं है. सो ऐसे लोग तो आपको, आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड हु दिस पर्सन इज. यू नीड टू अंडरस्टैंड, गाइज, यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ. मॉडल्स आर नॉट डम. Models, artists are not dumb. We are the most intelligent people. An artist is the most intelligent person on this planet. You need to understand. So please, when you work with someone, inquire properly. Don't get carried away. I always use this statement, do not get carried away. Now, how to groom yourself best for photo shoot, poses, body language, smile, etc. Yeah, firstly, I'm sorry I couldn't take this question first. अभी मैं बता रहा हूँ आपको. Firstly, photo shoot, अगर आप कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कर रहे हो तो you need to understand the product first. जैसे प्रिंट शूट्स में हम लोग करते हैं. अगर हमें एक वाइन ग्लास या से अ टूथपेस्ट और अ पेन
हमारे हाथ में देते, that's a product that I have to display. Now, how many poses can I give with that particular product is very important. So firstly, I need to understand that product. I need to work on my poses. A set of homework should be done. और उन पोजेस को हम अपने फोटोग्राफर्स के साथ डिस्कस करें और फिर उस शॉट को हम कैमरा पे दें, because obviously the photographers will do their homework for the product, and being a model you have to understand. Now coming back to how to groom yourself the best, dear, it comes only with practice. Yeah, you keep on doing these tips, you keep on following some grooming techniques जो थोड़ा सा ऑनलाइन होता है वो भी आप फॉलो कीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि आई एम कमिंग अप विथ माय ओन ग्रूमिंग स्टूडियो, सो it would be very much soon for you people, so you can come there and we can just train you properly from tip to toe, right? Body language is very important. Please work on it. You have to practice in front of a mirror. If you feel your body language is not looking good on a pose, हम लोग सेल्फी लेते हैं, you know, we keep on taking selfies, but कुछ सेल्फी हम लोग 4, 5, 10, 15 सेल्फी लेते हैं और एक सेल्फी पोस्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि I'm not looking good in this selfie or a photograph. Same goes with your poses. Same goes with your body. So you need to work on it. अभी मैं इतना ही बोल सकता हूँ because you know you guys can't meet me and I can't teach you right now. And online, I really do not believe in teaching online एकदम से, but उसमें उतना नहीं आप सीख पाते हो. But this is how you can practice on your things. And yeah, please take references from magazines and images over Google. That will help you a lot. Yeah, all the very best, and please message me if you have any problem. A lot of, I think one more question was there. किसी ने अभी एक question पूछा था. I'm not getting that. I'm so sorry. Yeah, languages के बारे में हो गया. Someone had asked me for the plus size modeling. What was that question? I think. Any idea how I come into the plus size modeling? Yeah, Monica. Hi Monica, I hope you're doing good. See, plus size modeling shows काफी हो रहे हैं आजकल. So if you want, I can send you some links, then you can just get into that. And yeah, that's it. And I hope you'll hit the bullseye, right? I'll send you certain links, and I'm also coming up with something. I was already in talks before the lockdown, so I'll get you connected to some people so you can really work out with your plus size modeling. Yeah. Yeah. Anything else? Anyone else who really wants to ask me anything right now? You can just throw up a question. रिया वॉक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. वी हैड अ टॉक अबाउट दिस एंड आई टोल्ड यू कि हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. इट डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट शो यू आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर यू यूजिंग, वेयर यू आर वॉकिंग, हाउ यू आर गोना वॉक, what is the choreography and the technical aspects. I can't get you online the technical aspects right now on live chats. जैसे कहा था, I'm coming up with my own stuff that you guys can just come there, learn from me directly the types of walk, the types of poses, and कोई चीजें particular types नहीं होती. मुझे लगता है हर एक body language हर एक का अलग होता है. So we really need to work out on that. Yeah. Yeah, we still have 5 minutes. If anyone wants to ask anything, we can just any questions. I think if I have not answered any of your questions, just do let me know. Thank you, Ria, for joining in, first of all. Janvi,
I really like what you have asked. Actually, I would say I loved what you asked. What should a model focus on more, beauty pageants or fashion show? Now, firstly, when you're a model, when you start off, yeah, you get into the trainings, you started getting into shows. आपके लिए हम सब के लिए जब हम start करते हैं, हम सब शोज से शुरू करते हैं. हमारे लिए शोज होता है एक शो. अब वो ब्यूटी पेजेंट है या फैशन शो नहीं पता है, बट ब्यूटी पेजेंट्स को आई फील, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आई फील देर इज अ स्टैंड, देर इज अ फुल स्टॉप फॉर अ ब्यूटी पेजेंट. बिकॉज वी स्टार्ट विथ लोकल लेवल्स, देन विल गो थोड़ा सा सिटी पे से हम लोकल जाते हैं, लोकल पे से हम नेशनल स्टेट जाते हैं, स्टेट पे से नेशनल, नेशनल पे से इंटरनेशनल, यूनिवर्स, ये वो कहीं ना कहीं वो एक स्टॉप हो जाता है. अगर आप अपनी पूरी लाइफ एक इस प्रोफेशन को दे रहे हो तो आई फील आफ्टर डूइंग एन नंबर ऑफ शोज एंड पेजेंट्स, बोथ वेज यू हैव टू कीप अ बैलेंस. आई थिंक यू शुड रियली फोकस ऑन शोज, बिकॉज आप जितना शोज करोगे यू विल गेट मोर एक्सपीरियंस फॉर प्रोडक्ट वॉक्स. एंड देन एक जन ने पूछा था हाउ डू वी गेट इनटू द रैंप, पेड रैंप शोज. You can then, once you have done enough number of work, you can get into the paid ramp shows also. I think you should focus on ramp shows, yeah, fashion shows. Ajinkya, thank you very much. You are more than welcome. But अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है. But I am looking forward कि जून में हम कुछ ना कुछ धमाकेदार करें. जल्द से जल्द let's pray कि हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकले. तो फैशन शोज और ब्यूटी पेजेंट्स है, इवेंट्स है, बहुत कुछ है. आई कीप यू अपडेटेड ओवर हियर. यस सर, प्लीज व्हाट्सएप पे पूछिएगा, मैं जवाब देता हूं. I hope Janvi, you are satisfied with what I have said. Thank you, Janvi. Thank you, Ria. Thank you everyone for giving such fantastic comments. Excited for shows. So, Ria, I'm excited to choreograph. I'm excited for all the events that has been lined up. I don't know when we are starting off, but I hope so very, very soon. Many pageant have fixing for winners. Is there something we can do if we come to know this or complain anyway? Now, see, this is a very, very interesting question. Yeah, and this is for everyone. Just listen to this, okay? Pageants fix होते हैं कि नहीं, पहले तो ये सवाल है. Yeah, पहले तो Ajinkya, I can't share my WhatsApp number right now over here. But I'll message you. You can keep on messaging me on Insta and I'll be connected to you. Yeah, coming back to the question. जितने पेजेंट्स में मैंने काम किया है, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूं इन चीज़ों को लेके, तो मैं वो नहीं करने देता हूं. बाहर के शोज का, पेजेंट्स का मुझे पता नहीं. जितना मैंने पहले आउट ऑफ सिटी, जहां मुंबई में और वहां पे काम किया था, वी हैड ऑलवेज सीन कि इतना कुछ ये पेजेंट्स फिक्सिंग विक्सिंग होता नहीं है. ये चीजें होती है उन लोगों से जो जीत नहीं पाते. दैट इज द वर्स्ट थिंग. यू नो, मॉडल बनने के लिए पहले तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखिए, एक्सेप्टेंस पावर. इफ यू आर नॉट विनिंग अ टाइटल, इट्स ओके. इफ यू आर नॉट विनिंग, यू आर गेटिंग एन एक्सपीरियंस. काफी पेजेंट्स में यहां पे, और मैंने कहीं पे बाहर भी देखे हैं, जब आपके सामने एक मॉडल आता है या आती है और जो हमारे दूसरे मॉडल्स है, वो सब आई वुड से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो उनको कंपेयर करने रखते हैं खुद के साथ. I'll just give you a very, very simple example. If I am standing, if I am a model, और मेरे सामने एक मॉडल एंटर करता है जो करीब 6 फीट 2 इंच का है, who is very good looking, who has got good body, अच्छा दिखता है, अच्छी पर्सनैलिटी है, तो मैं उसको कंपेयर करने लगता हूँ. यार ये तो जीत गया, यू नो, यही टाइटल, इसका ही टाइटल है, यही जीतेगा, यही, ये एक मेरे दिमाग में आ जाता है. फिर मैं क्या करता हूँ कि जब शो करीब आता है या शो का दिन होता है, तब मैं जाके दूसरों को बोल देता हूँ, यार ये पेजेंट फिक्स है.
यू नो दिस पेजेंट इज फिक्स, यही जीतेगा, यही जीतेगा. और अगर वो बंदा जीत जाता, ही टेक्स द टैग, everyone starts believing that I was right. So firstly, if you come to know the pageant is fixed, be a girl enough and walk out. Do not do that show. पर अगर कोई आपको सिर्फ आके बोल रहा है कि ये पेजेंट फिक्स है, don't listen to them, because a lot of time these people come to lower your confidence level. आपको demotivate करने के लिए आते हैं. Because you are demotivated, you won't perform, and then the other guy will perform, or the other model will perform, and they will win. They'll be on a better position than you. So if you come to know 110%, 1000% that the pageant is fixed, walk off the show. Just say, I'm not doing the show. Right? So I don't think personally कोई ये सब grudges करते, किसी को किसी के लिए कोई grudge नहीं होता है. And if you feel that such shows are being done, आप ऑर्गेनाइजर से बोलिए, आप कोरियोग्राफर्स से बात कीजिए. They'll tell you what is to be done. You know? So that's the answer to your question. Anyone else? We just have वॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है रिया, और वो है बी योर सेल्फ. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. बी योर सेल्फ. बी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ and you'll be the best. Okay. Anything else? We just have like 2 minutes more and then we are winding up with this session. So अगर किसी को कुछ भी पूछना है, you can just throw a message over here. I hope everyone is satisfied with whatever answers you have got. Thank you, Monica. Thank you, everyone, to give a thank you very much. God bless you. And I would just request everyone, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, whatever grooming tips या आपको कुछ भी चाहिए, अगर आपको और भी related चीजें चाहिए, you please message me. So in my next session, we will talk only about that one category. You know, हम लोग एक एक कैटेगरी को लेते हैं and we will talk about that. Maybe posing है, प्रिंट शूट्स है, तो सिर्फ प्रिंट शूट्स की बात करेंगे. आज मैंने एक सेशन ओवरऑल लिया हुआ है ताकि सबको पता चले कि व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग. सौरभ, when I first attended a fashion show, I was embarrassed to walk the ramp because of hesitation. Luckily, you helped me and guided me. Now I ask how to walk the ramp with confidence. Perspective of a, what is that? Okay, so सौरभ, hesitation किस बात का भाई? I was there with you. You do not need to hesitate. Okay, and thank you कि जो भी मैंने आपको टिप्स दिए आपने उसके ऊपर काम किया. You are asking me now. I'm asking you how to walk the ramp with confidence. You have got all the confidence now. You do not have to be ashamed. You do not have to hesitate. You do not have to fear anyone. When you're on the ramp, I tell all my models, it is your kingdom. Walk like a lion, right? You'll do the best I know. I've seen you walking. You are a good model. You just have to work more. Confidence, do more shows, interact with people more, practice more. Automatically आपका confidence बढ़ जाएगा. आज आपने इतना सब यहाँ लिख दिया, ये भी एक confidence ही है ना? So if you have any problem, I'm here to help you. Okay, so please message me. Don't worry about anyone. Do not think what people think when you're walking. Just walk. One thing you always have to remember, 1,000 people are sitting and clapping. You are the person who is walking. So you need to be confident. Right? So you will be doing great, Saurabh. Anyone else? Thank you, Ria. Thank you for appreciating. Thank you very much. Thank you, people. Thank you, friends, everyone who have been here. It was lovely. It was a pleasure.
meeting you guys live. I can't see you, but I can see everyone's chat over here. Hi, I hope I'm saying the name right, Trupti. Hi, Trupti, how are you? I'm doing great, Trupti, thank you. Okay, everyone, I'll just take a leave now, and I hope everyone is safe. They're staying home. Please take care. Please be home ताकि हम लोग इस वायरस को जल्द से जल्द निकाल सके, and we will start with a lovely fashion shows and the industry get going as soon as possible. If we are home, we can start working faster. Thank you very much. God bless you. Bye bye. And